हाय दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। सो आज स्टार्टअप मंत्रा का दूसरा एपिसोड है एंड एज आई टोल्ड यू इस शो में हम आपको मिलवाते हैं उन ब्रिलियंट माइंड से जिनका आइडिया आज लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है एंड एज वेल एज कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियन इकोनॉमी। इंडिया में लगातार स्टार्टअप्स बूम कर रहे हैं। इंडिया में एज पर अगस्त 2022 डेटा ऑलमोस्ट 77,000 स्टार्टअप्स हैं। वेल आज के एपिसोड की बात करें तो आज हमारे साथ बेहद खास गेस्ट जुड़ रहे हैं। खास मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपकी और हमारी जिंदगी को काफ़ी आसान बना रहे हैं। कैसे? देखिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मनी मैनेजमेंट करना कितना ज़रूरी है। वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ मच टू इन्वेस्ट, कैसे एक्सपेंसेस मैनेज करें, बजट कैसे सेट करें, लॉन्ग टर्म गोल कैसे पूरा करें, रिटायरमेंट के लिए कैसे प्लान करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। समटाइम्स इन सब में हम लोग गलती कर बैठते हैं। एक छोटी सी गलती आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकती है। ऐसे में वी नीड अ फाइनेंशियल प्लानर एंड अ पर्सन जो आपको इन्वेस्टमेंट को लेकर सही एडवाइस कर सके। तो हियर कम्स हाउस ऑफ Alpha, a financial planner and wealth management advisory that offers customized portfolios. Started in September 2021, the tech-driven startup offers customized financial planning and wealth management services by leveraging advanced technologies and extensive research capabilities. Today, we have with us brilliant minds behind the House of Alpha, Bhuvanaa Shreeram, co-founder and head of financial planning, and Mr. Harish Menon, co-founder and head of investment and product research. Welcome to our show, Startup Mantra, Bhuvanaa and Harish. Thank you. So, सबसे पहले let's have a quick introduction of House of Alpha. House of Alpha is a fee-only SEBI-registered wealth management entity. Essentially, what we do is financial planning and investment advisory, plus everything else that is needed for a client to handle their finances throughout their lifetime. So we aspire to be the personal CFOs for many clients who want their money to be managed in the right way. तो आप दोनों में से आइडिया किसका था and how do you guys meet? We've known each other for some time. We had common clients and we have a common friend also. And during the lockdown, I was doing a similar talk show for some of my clients. And I'd invited Harish over as a guest to talk about the work that he does. And, I came back to meet him and we got talking. He was saying he has an RA license that he's not actually using as well as he could. And I've always wanted to be a registered investment advisor. So we thought, okay, why don't we come together and do it? We've worked together in the past, so we kind of know what our value systems are, what's important to us. And we realized that there was a match and our skill sets were complementary. So while he takes care of investment markets, products, I'm more the financial planner. I look at people, behaviors. So we thought that it was a very good complementary skill sets, but matching value systems would make for a great team. House of Alpha started in 2021. तो इनिशियली आप लोगों को चैलेंजेस भी आई एम श्योर काफी सारे आए होंगे। तो क्या क्या वो चैलेंजेस थे एंड कैसे आप लोगों ने टैकल किया? टेक्निकली चैलेंजेस उस तरीके से नहीं आए जो एक टिपिकल स्टार्टअप को आता है, बिकॉज ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हमको प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं ढूंढना है, हमको मिनिमम वायबल प्रोडक्ट नहीं ढूंढना है, बिकॉज वेल्थ मैनेजमेंट इज अ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इन दैट सेंस। हमको चैलेंज इस बात का आया कि क्लाइंट्स फी ओनली में कैसे ऑपरेट करेंगे, बिकॉज वेल्थ मैनेजमेंट एज एन इंडस्ट्री ट्रेडिशनली हैज बीन ऑन अ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। मैं आपको एडवाइस दूंगा लेकिन मुझे इनकम मिलेगा कमीशन से। आप इन्वेस्ट करोगे और मुझे उस म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनी से कमीशन मिलेगा, इज अ ट्रेडिशनल मॉडल। हमारा मॉडल यह है कि क्लाइंट्स हैव टू पे अस फॉर द एडवाइस। राइट। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमको कंसल्टिंग देगा एंड डॉक्टर हमसे फीस चार्ज करेगा डायरेक्टली, सेम मॉडल हमने यहाँ पे हाउस ऑफ अल्फा में रखा हुआ है। वो एक चैलेंज पहले भी था और अभी भी कुछ हद तक है कि बहुत सारे क्लाइंट्स को फीस डायरेक्टली देने में हिचकिचाहट कभी कभी होती है, इवन दो वो इनडायरेक्टली भी देते हैं, बट टू सम एक्सटेंट दैट हैज बीन अ चैलेंज। अदर देन दैट, बिजनेस सेटअप करने में हमारे जो प्रोडक्ट स्वीट्स है, हमारे ऑफरिंग्स है, वो हमारे लिए बहुत क्लियर थे। जैसे भुवना ने बताया, हमारा बैकग्राउंड और एक्सपर्टीज अलग है, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल साथ में आ गए। एक और चीज जो हमने किया है वो है टेक डेवलप करना। तो टेक मेरे लिए और भुवना के लिए, दोनों के लिए नया था। सो टेक टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना और उनको बताना कि एक्चुअली हमको क्या बनाना है was an interesting challenge जो हमने अभी लास्ट एक साल में फेस किया है। भुवना, आप लोगों के जो क्लाइंट बेस है वो कैसा क्या रहता है? कंपनीज रहती हैं या फिर इंडिविजुअल्स होते हैं? आपके क्लाइंट बेस क्या रहता है? So our client base is predominantly only individuals. So we don't work with any companies at all. There's no B2B business, only families and individuals. But predominantly they are corporate executives and entrepreneurs as well.
So senior corporate executives who are in possession of a lot of ESOPs and a fairly good, pay package, who want to build, wealth for their retirement, for financial freedom for their children. So that's our, most part of our clientele. Some business owners as well who have built a reasonable sized business now, who are looking at probably selling off the business or building a personal balance sheet. So who want to take money out of the table and build a personal balance sheet so that they can ring fence family requirements. So that is the kind of clientele who most benefit from the work that we do. जो आप लोगों का बिजनेस मॉडल है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का, तो आप कितना देखते हैं कि मार्केट में इस बिजनेस मॉडल की कितनी एक्सेप्टेंस है, लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं इस तरीके से, या फिर अभी भी मतलब ऐसा है कि लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं? एज अ इंडस्ट्री ये नया कॉन्सेप्ट है इंडिया में कि फीस दे के फाइनेंशियल एडवाइस लेना है किसी एडवाइजर से. राइट. ये मॉडल इज अप्रोक्सीमेटली 10 years old. एंड इस 10 साल में से पहले 5 साल में इसका ज्यादा अहमियत नहीं था टिल अराउंड 2017, बिकॉज ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स ही नहीं थे मार्केट में जो मैं फीस लेके आपको रिकमेंड कर सकता हूँ जिससे आपको कुछ फायदा होगा, बिकॉज वहां पे डबल फीस चार्ज हो रहा था. आप सर्विस प्रोवाइडर को भी फीस पे करोगे और मुझे भी आप मेरे एक एडवाइस के लिए फीस पे करोगे, वैसा एक लेयर था टिल अराउंड 2017. उसके बाद से नए प्रोडक्ट्स आने स्टार्ट हुए जो हम म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में बोलते हैं डायरेक्ट प्लान्स. सो डायरेक्ट प्लान्स आने की वजह से क्या हो गया, मैं आपको एडवाइस दूंगा और आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करोगे तो आपका एक्चुअली कॉस्ट सेविंग्स होगा एज फार एज दैट प्रोडक्ट इज कंसर्न. एंड बिकॉज आपको वहां पे कॉस्ट सेविंग्स हो रहा है, यू वुडंट माइंड पेइंग फॉर द एडवाइस इटसेल्फ. पहले क्या हो रहा था कि आप मुझे भी पे करोगे और वहां पर भी पे करोगे तो आपका डबल कॉस्ट आ रहा था. सो पिछले 5 साल में इसका एक्सेप्टेंस मच बेटर हो चुका है. Relatively it has grown a lot in terms of acceptance from clients. अब इसमें दो पहलू है. एक है कि एक्सेप्टेंस तो है लेकिन आप कितना फीस पे करना चाहते हो. आप जब इनडायरेक्टली फीस पे करते हो, सपोज मैंने फ्यू करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और एडवाइजर को कमीशन जा रहा है लेट्स से म्यूचुअल फंड से, तो मुझे डायरेक्टली नहीं पता चल रहा है कि मैंने कितना अमाउंट उनको दिया हुआ है. इनडायरेक्टली मैं ढूंढ सकता हूँ बट एटलीस्ट मैं एक डायरेक्ट चेक तो नहीं लिख रहा हूँ. इस मॉडल में क्या होता है, we are advising, we are telling them what to do financial planning wise, investment wise, and then they have to actually transfer money to us or write a check to us. And जब वो moment आता है, that is when they realize, oh हम इतना पे कर रहे हैं, क्या इसका value है? And then they always ask that question, is it really valuable for paying so much fees? And that's a good question to ask, and that's the question we like because like any consumer, right? अगर आप जाके टेलीविजन भी खरीदते हो या मोबाइल भी खरीदते हो, आप हमेशा वैल्यू फॉर मनी सोचोगे. आप हमेशा सोचोगे मैं इसके लिए इतना क्यों पे कर रहा हूँ, इसमें क्या सर्विसेज मुझे ऑफर मिलेगी. सेम वे यहाँ पर भी वो सवाल अभी उठना स्टार्ट हुआ है कि अगर मैं फीस इतना पे कर रहा हूँ, मुझे इसमें से एक्चुअली क्या बेनिफिट्स मिल रहा है. एंड वो अगर हम उनको कन्विंस कर पाते हैं कि ये चीज इंक्लूडेड है एंड आपके लिए टेक्निकली स्पीकिंग आपको फीस वाइज फायदा ही होगा, देन द क्लाइंट इज विलिंग टू पे. बट उनके लिए भी एक नया मॉडल है, क्लाइंट्स के लिए भी, सो उनको ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है हमको कि ये एक्चुअली मॉडल वर्क कैसे करेगा. Also, when it is a high value investment, right? So clients have 10 crore, 15 crore investments to make. Because we have a cap on our fees, it works out a lot better for them. So, they benefit a lot by saving on the commissions and the hidden costs while they pay a fixed cost to us. So in their mind, it's clear for them, oh, my cost is only so much. For this relationship. So थोड़ा आराम है. After a certain point, they feel better. जब भी कोई स्टार्टअप हम लोग शुरू करते हैं तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो भी एंटरप्रेन्योर है उसे पहले अपनी कैपिटल में से अपने स्टार्टअप को इनिशिएट कर लेना चाहिए या फिर स्टार्टिंग में ही फंड रेजिंग के लिए सोचना चाहिए? अगर आप हाउस ऑफ अल्फा की बात करें, इट इज अ ट्रेडिशनल बिजनेस. इसमें ऐसा कुछ नया कॉन्सेप्ट मुझे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. आई एम नॉट क्रिएटिंग अ न्यू मार्केट इटसेल्फ. बिकॉज आप जब कोई भी चीज के लिए नया मार्केट क्रिएट करोगे जहां पे कंज्यूमर्स को यही नहीं पता कि ये किस चीज के बारे में स्टार्टअप है, तो आपको काफी स्पेंड मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग में करना पड़ेगा. उसमें अगर आपको बहुत पैसे जाएंगे एंड अगर फाउंडर्स के पास वो टाइम पे पैसे नहीं है, देन ऑब्वियसली दे विल हैव टू डू फंड रेजिंग. एज अ थंब रूल, मैं हमेशा जब स्टार्टअप्स को कंसल्ट भी करता हूँ, मैं पर्सनली भी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता हूँ काफी सारे, मैं उनको एक ही एडवाइस देता हूँ, जब तक हो सके फंड रेज मत कीजिए. जितना हो सके आप इंटरनल फंड से बिजनेस खड़ा कीजिए, बिजनेस स्टार्ट कीजिए. एंड जब आपको ट्रैक्शन आएगा, जब आपको पता चल गया कि आपके फ्यू क्लाइंट्स आ गए, रेवेन्यू आ गए, तब जाके फंड रेज कीजिए मार्केट से इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी.
बिकॉज तब आपको अपने बिजनेस का एक्चुअल ट्रू वैल्यू मिलेगा। एंड यही फिलोसफी हमने हाउस ऑफ अल्फा में यूज किया है। अभी तक इट इज टोटली बूटस्ट्रैप्ड, इट इज ऑल मनी इन्वेस्टेड बाय द 4 co-founders, Okay. एंड वी विल कीप इट दिस वे फॉर एटलीस्ट अ ईयर और सो, Okay. जब तक कि हमारा प्रोडक्ट उस लेवल पे पहुंचेगा जिस लेवल पे हमको उसको ऑफर करना है क्लाइंट्स को। सेकंड, ये एक ऐसा स्टार्टअप है जिसमें टेक हेवी या मार्केटिंग हेवी स्पेंड के बिना भी आप ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हो। Right. लेकिन अगर आपको ग्रोथ रेट अलग लेवल पे चाहिए, इफ यू वांट टू ग्रो एट अ वेरी रैपिड रेट, देन मार्केटिंग स्पेंड विल बी वेरी हाई। अगेन फॉर दैट मेनी ऑफ द स्टार्टअप्स रेज मनी। सो इट इज अ चॉइस अबाउट आपको किस स्केल में पहले पहुंचना है, उसके बाद फंड रेज करना है, या डे वन से आपको करना है। हमारा फिलोसॉफी है कि एक एक पर्टिकुलर लेवल में पहुंचने के बाद वी वुड वांट टू रेज फंड्स। How do you generate alpha in House of Alpha? अल्फा का टेक्निकल मतलब होता है कि मार्केट का जो रिटर्न्स है उससे आपके पोर्टफोलियो में एक्स्ट्रा कितना मिलेगा। Right. एंड व्हेन आई से मार्केट, वो डिपेंड करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो का बेंचमार्क क्या होगा। इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में हर एक पोर्टफोलियो का, हर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक बेंचमार्क होता है। आप उसका रिटर्न्स किससे कंपेयर करोगे। सो इट इज ऑलवेज अ रिलेटिव कंपैरिजन दैट वी डू। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं किसी को एक इक्विटी पोर्टफोलियो बनाने में एडवाइस करता हूँ, मैं अपने क्लाइंट को बोलता हूँ कि आप इक्विटी पोर्टफोलियो इन सारे शेयर्स या इन सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कीजिए। Okay. देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 years, वो कंपेयर करेंगे कि मैंने जो एडवाइस दिया उस पोर्टफोलियो का रिटर्न्स कितना है Right. वर्सेस मार्केट का रिटर्न्स कितना है। व्हेन आई से मार्केट इन दिस कॉन्टेक्स्ट कुड बी समथिंग लाइक निफ्टी, तो वो Right. बोलेंगे निफ्टी ने 12% दिया लास्ट एक साल में, आपके पोर्टफोलियो ने लेट्स से 14% दिया है, तो वो जो डिफरेंस है वो 2% अल्फा है। हम ये 3 तरीके से क्रिएट करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम 3 तरीके से क्रिएट करें। एक, हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द क्लाइंट कम रखने की कोशिश करते हैं। सो वी डोंट नेसेसरली और जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट रेकमेंड कॉस्टली इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, जो बड़ी मार्केट वैल्यू के स्टॉक्स होते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आज की तारीख में है इंडेक्स फंड। तो मैं सीधा उनको एक इंडेक्स फंड रिकमेंड कर दूंगा एज कंपेयर टू एक एक्टिवली मैनेज फंड जिसमें उनको एक्स्ट्रा 2% का कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो बाय रिकमेंडिंग अ लोअर कॉस्ट प्रोडक्ट, उनका ऑटोमेटिकली रिटर्न्स उतना एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज आप कॉस्ट कम रखोगे तो आपका रिटर्न्स बढ़ता रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा चीज हम जो करते हैं वो है बेटर स्कीम सिलेक्शन इन म्यूचुअल फंड, बेटर स्टॉक सिलेक्शन। कैसे हम अपना एक्सपर्टीज यूज करके उन स्कीम्स को ढूंढे जो शायद इन द नेक्स्ट 3 to 5 years मार्केट को बीट कर पाएगा। इट्स नॉट अ इजी टास्क एंड इट इज नॉट अ गारंटीड अल्फा ऑल्सो, बिकॉज काफी बार ऐसे होगा दैट हमने अपना सारा रिसर्च कर लिया, उसके बाद भी अल्फा जनरेट नहीं हो रहा है। सो फैक्टर नंबर 1 में इट्स अ गारंटीड अल्फा, लेसर कॉस्ट इज मोर रिटर्न्स। फैक्टर नंबर 2 में वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द प्रोडक्ट सिलेक्शन। एंड थर्ड फैक्टर हम जो यूज करते हैं वो एक टेक्निकल फैक्टर है जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स यूज करके हम काफी बार पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज कर पाते हैं, हेज कर पाते हैं। सो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल है मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए, जो हम यूज करके उनके पोर्टफोलियो में अल्फा जनरेट करते हैं। Can I add one more thing here, which is very essential but not very openly talked about, is generally avoid bad behavior of the client. That's a great alpha generator, because the whole investment plan is based on a financial plan, and the client knows why they are making an investment. You know, why are they making a particular decision with their money? They are more likely to stick to the plan, and that itself will avoid a lot of, you know, stupid mistakes that many people make. So by creating that ecosystem where you are connecting the purpose to the investment plan, you are ensuring that you're avoiding leakages, avoiding mistakes, and that itself is a great alpha generator. You are a financial planner, तो एक स्टार्टअप को अपने finances वो कैसे प्लान करने चाहिए? आइडियली एक अच्छे स्टार्टअप का जिसका विजन बहुत लॉन्ग टर्म है, दे शुड हैव अ सीएफओ राइट फ्रॉम डे वन। बिकॉज सीएफओ का काम होता है ये पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करना स्टार्टअप के लिए, कि उनके पास जो फंड्स आए हैं उसका यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए, कब उस पैसे को किधर डिप्लॉय करना चाहिए, कब नेक्स्ट फंड रेज प्लान करना चाहिए। सो पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल प्लानिंग होता है, दैट्स टिपिकली द जॉब ऑफ अ सीएफओ। अगर वो स्टार्टअप डे वन में सीएफओ हायर नहीं करना चाहते, देन देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट्स जिनको आप रिटेनर में रख के उनसे एडवाइस ले सकते हो कि हमें फिनेंसेस कैसे मैनेज करना होगा, बिकॉज टेक्निकली दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट एस्पेक्ट।
हरीश, एक इंटरव्यू में मार्क जकरबर्ग ने ये कहा था कि एवरी आइडिया इज $1 मिलियन आइडिया, लेकिन ये $1 मिलियन आइडिया है, ये लोगों से बनता है जो भी कंपनी में होते हैं। तो जब आप लोग अपनी कंपनी के लिए लोगों को हायर करते हैं, तो क्या एक टॉप मोस्ट क्वालिटी होती है जो आप कंसिडर करते हैं किसी को भी हायर करने से पहले? ये बहुत ही आपने अच्छा पॉइंट बताया, बिकॉज आइडियाज तो 100 दिन के मुझे भी आते हैं। इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। वो आइडिया को आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे और उसको एक्चुअली आप फ्रक्टिफाई कैसे करोगे, एंड दैट्स ऑल अबाउट पीपल एंड नॉट ओनली फाउंडर्स। अगर फाउंडर्स का विजन क्लियर है, फाउंडर्स का एग्जीक्यूशन क्लियर है, बट फिर भी एज हम्म, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज, वो नेक्स्ट लेवल मिड मैनेजमेंट एंड जूनियर एम्प्लॉयज तक वो एक्चुअली वो वो विजन होना चाहिए कि कैसे हम लोग ग्रो करने वाले हैं। हम्म, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट दो तरीके से, एक मैं स्टार्टअप की तरफ से बताऊंगा और दूसरा एम्प्लॉय की तरफ से। स्टार्टअप की तरफ से यू हैव टू बी वेरी वेरी ओपन अबाउट योर विजन एंड बी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट। आपको हम्म, बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि हम कौन से ग्रोथ पाथ में जाने वाले हैं, हम्म, हमारा विजन क्या है, हम उसको कैसे अचीव करने वाले हैं, एंड यू हैव टू बी वेरी ओपन अबाउट ऑल दिस व्हेन यू आर टेकिंग एन इंटरव्यू। हम्म, A startup is a place where the person who's applying also is not very sure a lot of times. अच्छे talent हम लोग कभी कभी ऐसे lose करते हैं बहुत सारे startups. So startup की तरफ से you have to be very clear about आपका vision और road map क्या होने वाला है. हम्म, In terms of hiring, we look for people who are passionate, obviously, not necessarily with the same background in that kind of space, but to have the right passion to work in a team which is like a startup, because हम्म, startup में काम करने का जो कल्चरल पार्ट है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वर्किंग इन अ स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन. सो अगर किसी के पास वो एटीट्यूड है कि हाँ हम एक ऐसे टीम में है जो अनस्ट्रक्चर्ड है, जो इनिशियली बहुत सारी चीज करेंगे एंड देन वी विल रीच अ स्टेज वेयर थिंग्स विल बिकम मच बिगर, एंड अगर उनका विजन है उस तरीके से, who can look at that long term vision, then we look to hire such people. हमारे एक्सपीरियंस में ऐसा देखा गया है कि इट हैज लेस कोरिलेशन विद समटाइम्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. सो इफ आई एम हायरिंग समवन विद लेट्स से अ लॉट ऑफ डिग्रीज, शायद उनमें वो विजन नहीं होता है बहुत बार कि वो हम्म, स्टार्टअप कैसे ग्रो करेगा एंड हम उनके साथ कैसे ग्रो करेंगे. सो यू नीड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ दिस एंटरप्रेन्योरियल स्टिक इवन व्हेन दे आर एन एम्प्लॉय. इवन दो दे आर एम्प्लॉय, उनके पास एक ऐसा विजन होना चाहिए कि हाँ मैं अपना बिजनेस एक्चुअली खड़ा कर रहा हूँ. आई नीड टू बी having that vision to be a part of that team. Bhuvna, your take on this? Yeah, so very similar to that. Somebody who will do what is necessary to be done and will not say, this is my job, this is not my job, and I'm not, I don't have the qualifications for it. So not come up with these things, but okay, this has to be done, we'll get it done. So that ownership, the willingness to go a little above and beyond because you're working on a bigger purpose, that is important value system for us, and we have to as a startup also we have to hire for attitude and then train for skills. So we do a lot of trainings internally to ensure that on the skill level they come up, but primarily we only look for this entrepreneurial instinct in people. Okay, Bhuvna, what is the first financial advice you give to your clients? Get an emergency plan done, get your insurances in place, That's and important. we'll talk about investments after. हरीश, जब मार्केट डाउन होती है तो आप किस तरीके से अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं कि कैसे अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करके रखें? इन्वेस्टमेंट्स इज मोर बिहेवियरल देन एनीथिंग एल्स. अगर आप देखोगे वेल्थ क्रिएशन जर्नी कोई भी बड़े इन्वेस्टर्स का, उसमें एक बड़ा हिस्सा होता है बिहेवियर का. मतलब जब मार्केट गिर रहा है तो वो पैनिक नहीं करे. उनका वो विजन होना चाहिए कि एक्चुअली ये लॉन्ग टर्म के लिए हमने क्रिएट किया है, तो इन 10 years मे बी ऑल दीज थिंग्स विल बिकम इररिलेवेंट. ये हम एजुकेट करते रहते हैं क्लाइंट्स को थ्रू आवर मंथली न्यूज लेटर्स, थ्रू द क्वार्टरली कॉल्स दैट वी डू विद द क्लाइंट. हम अपना जब इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन भी देते हैं, हम उनको बताते हैं कि फर्स्ट ईयर में इक्विटी पोर्टफोलियो कैन हैव अ ड्रॉ डाउन. ऐसा हो सकता है कि मार्केट गिर गया ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लेट्स से वॉर और कोविड जो हुआ था, एंड आपका पोर्टफोलियो शायद गिर सकता है. बट बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा, बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, 5 साल अगर आपने इन्वेस्ट किया, 10 साल अगर आपने इन्वेस्ट किया, 20 साल अगर आपने इन्वेस्ट किया, तो डेटा कैसे चेंज होता है, वी एक्चुअली पुट दैट ऑन आवर स्लाइड्स, वी पुट दैट ऑन आवर रिपोर्ट्स, एंड वी कीप एजुकेटिंग देम दैट कुछ कुछ पोर्टफोलियो आपका जो हिस्सा है वो आपके रिटायरमेंट के लिए है, फॉर एग्जांपल, या आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए है. So please don't keep looking at the markets every day, every week, every month. It will do what it will do, but you have to stay in the market for the goals that you have created. So हम पेशेंस. डिजाइनिंग भी वैसे ही करेंगे कि शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए वी वोंट हैव एनी वॉलेटाइल एसेट्स, बट अगर हमने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इक्विटी रखा है, अगर मार्केट गिरता है
the only communication aspect that we ensure is don't panic and stick to the plan. So as Bhuvanaa said, अगर आपका plan clear है कि हम क्यों कर रहे हैं, then automatically client behaviorally they get better over time. वो ना व्हाट डू यू थिंक, ज्यादातर लोग जब खुद से फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो वो क्या मिस्टेक्स करते हैं यूजुअली? Financial planning also has evolved over the years, so when we started off, we were doing financial planning in a certain manner, what we called goal based financial planning. Har ek goal ke liye alag alag, you do to buy a car you have one goal, and then children ke liye one alag goal, retirement ke liye alag goal. So that is how goal based financial planning has been happening. And predominantly most of the DIY platforms or any other calculators that you get online, they all focus on this kind of planning. However, we don't do it that way. It is our belief that there is only one objective. You can't go after multiple objectives. There's only one objective for a financial plan. That single objective for the financial plan is that your money should last while you do all of these things. You have children, have to go to college, you have to live a good lifestyle, you have to go on those holidays, you have to buy the new car. All of that should happen, but still the money should not run out in your lifetime. Right? That is that one single goal, right? So when you look at it that way, there is an overarching view. There is a 360-degree view. You get a very good perspective of the decisions that you have to make on a daily basis. Most often when people do their own financial plan, this larger picture, this perspective, this long-term perspective is missing. They're very narrow focused. You're looking at, okay, for the car, I'm doing it. Okay, you do something for the car, but what about something else? In the next 2 years, your child is going for higher education, and today you want to buy a 30 lakh rupee car, right? So you're not looking at both of them together in the same canvas. So that's one big mistake that I see most DIY financial planning and a lot of financial advisors also make. As we are seeing कि recession hit कर सकता है, and कहीं ना कहीं recession hit कर भी रहा है, तो ऐसे में लोगों को कैसे prepare रहना चाहिए? So like I told you, your emergency plan has to be in place. Your insurances have to be in place. So that's the first advice ever, right? So recession, no recession, it's not going to make an impact to you because you're cushioned. You have your, self-protection. You have your own cocoon. You're kind of immune to whatever happens outside. In the world. So that's the first thing. You create that immunity and then you can go places. हरीश, एक बहुत ही बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन है जो हर बिगिनर के माइंड में रहता है जब वो इन्वेस्टमेंट वाली इन्वेस्टमेंट वाली थिंग में आता है, तो वेयर टू इन्वेस्ट, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है. सो आप इस पे क्या बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, वेयर टू इन्वेस्ट? सो फॉर दोज डू इट योरसेल्फ काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स जिनके पास एडवाइजर नहीं है, जिनके पास कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर उन्होंने हायर नहीं किया हुआ है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने पोर्टफोलियो को सिंपल रखें. द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन अ डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इज कॉम्प्लेक्सिटी. वो बहुत सारे चीजों में इन्वेस्ट कर देते हैं एंड उससे क्या हो जाता है कि पर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट उनका एक्सपोजर काफी कम हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वो शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे और उनके पास 27 स्टॉक्स होंगे उनके पोर्टफोलियो में. उन्होंने कहीं से एक नाम सुन लिया, फिर दोस्त से कुछ सुन लिया, फिर उन्होंने 27 स्टॉक्स ले लिए. फिर उनको किधर ने किसी ने बताया कि म्यूचुअल फंड्स भी अच्छे हैं, तो उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, बट उधर भी उनके पास 12 स्कीम हो गए. फिर उनके पास कुछ पैसा एफडी में पड़ा हुआ है, फिर कुछ पैसा उन्होंने किसी दोस्त को लोन देके रखा हुआ है. इससे होता यह है कि उनको लग रहा है कि वो इन्वेस्ट कर रहा है, बट इट बिकम्स अ वेरी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. एंड सब बोलते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन अच्छी बात है, बट द प्रॉब्लम विद डाइवर्सिफिकेशन इज वो पूरा का पूरा आपका जो रिस्क है वो तो कम करेगा ही, बट पूरा आपका रिटर्न्स भी कम कर देगा. एंड बहुत बार आप देखोगे कि बहुत सारे चीजों में इन्वेस्ट करने से नेट रिटर्न्स आपको कुछ नहीं आता है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ बिगिनर इज टू कीप इट सिंपल. एंड व्हाट डू आई एडवाइज टू एनीबॉडी हु कम्स टू मी एंड सेज हाउ शुड आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग? मैं उनको बोलता हूँ बहुत सिंपल है, आप जितना भी पैसा पहले सेव कर सकते हो कीजिए. कट डाउन ऑन वट एवर स्पेंडिंग यू कैन, सेव एज मच एज यू कैन इन द बिगिनिंग पार्ट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज कंपाउंडिंग विल वर्क फॉर यू इन द लॉन्ग रन. एंड जितना भी आपने सेव किया है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर लेट्स से 10 years 15 years काइंड ऑफ गोल, सिंपल इंडेक्स फंड्स में आप एवरी मंथ इन्वेस्ट कर सकते हो. नो ब्रेनर. आप सिंपली निफ्टी फंड या सेंसेक्स फंड पिक कीजिए, कोई भी म्यूचुअल फंड का. उसका एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम होता है, उसका कॉस्ट भी काफी कम होता है, 0.1% पर एनम. एंड आप पार्टिसिपेट कर रहे हो टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया इन निफ्टीज केस. एंड ऑटोमेटिकली वो जो कंपाउंडिंग देगा मार्केट,
वो आपके पोर्टफोलियो के साथ भी वो कंटिन्यू होगा। आप ये जो शफलिंग करोगे, ये स्टॉक, ये प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट, उसी में आपका पूरा रिटर्न्स किल हो जाएगा। उससे अच्छा आप सिंपल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्रिएट कीजिए एंड कीप इट वेरी वेरी सिंपल। डोंट हैव टू मेनी थिंग्स इन योर पोर्टफोलियो। यूजुअली हम लोग देखते भी हैं कि लोग डाइवर्सिफिकेशन में काफी ज्यादा बिलीव रखते हैं ताकि उनको रिस्क वो कम मिल जाए कि अगर यहाँ पे नुकसान हो गया ठीक है वहां से वो कंपनसेट हो जाएगा। अमूमन हम ऐसा देखते भी हैं। ओके हरीश, किसी भी कंपनी का लो एंड हाई टाइम हमेशा रहता है, तो किसी भी स्टार्टअप में जब क्राइसिस आते हैं तो ऐसे में एंटरप्रेन्योर्स को उस क्राइसिस को सरवाइव करने के लिए क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो अपने ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टार्टअप ऑल्सो इज एन इमरजेंसी फंड। उनके भी जब वो कंपनी के फाइनेंशियल प्लान करेंगे, उनके पास भी एक ऐसा फंड होना चाहिए जो वो सिर्फ रेनी डे में यूज करेंगे। वी हम्म। कॉल इट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड ऑफ कंपनीज। वो रिजर्व्स विल बी इन्वेस्टेड इन सम सेफ सिक्योरिटीज, मे बी सम गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सम फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स। एंड हम्म। जब क्राइसिस सिचुएशन आएगा, जब उनका रेवेन्यू हिट हो गया, जब उनके पास प्रॉफिट्स नहीं हो रहा है, देन दे विल यूज दिस रिजर्व मनी टू सर्वाइव दोज बैड फेजेस फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। हम्म। From a behavioral point of view, it all depends upon how strong-willed the founders are. If it's one founder or co-founders, उन्होंने वो स्टार्टअप क्यों स्टार्ट किया था, वो उनका वाई जो है, वाई वो बहुत क्लियर होना चाहिए। Otherwise, there will be panic. Otherwise, there will be a phase where things are not working out, and they might think that oh, ये तो मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मुझे हम्म। अभी इसमें से बाहर आना चाहिए। बट अगर आपका वाई बहुत स्ट्रांग था कि हमने ये स्टार्टअप क्यों स्टार्ट किया, हमारा क्या पर्पस था, राइट। अगर आप उसके साथ ट्रू रहते हो, देन आई थिंक ऑल क्राइसिस बिहेवियरली कैन बी टेकन केयर ऑफ। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। सो अगर कंपनी एक बैड फेज से गुजर रहा है, अगर कंपनी एक प्रोडक्ट बना रहा था जो लेट से उसका मार्केट फॉर वॉट एवर रीजन अफेक्ट हो गया, रेगुलेटरी रीजन की वजह से, हम्म। हम्म। आपको पूरे टीम को वो ओपनली फ्रैंकली कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हमारा प्लान क्या था, हम्म। क्या ऊपर नीचे हो गया है, क्या क्राइसिस आ गया है, एंड हम इसमें से कैसे उभरने वाले हैं। बिकॉज आपके पूरे टीम के हेल्प के बिना आप उस क्राइसिस के बाहर नहीं आ सकते। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट एज अ लीडर, दैट हमने प्लान किया था, हमने ये सोचा था, बट ये अजम्पशंस रॉन्ग हो गए। बिकॉज हर स्टार्टअप में अजम्पशंस है, राइट। एंड पीपल विल अंडरस्टैंड। जो आपको ज्वाइन किए हैं वो आपको समझेंगे, हाँ ठीक है, कुछ अजम्पशंस रॉन्ग हो गए, अब क्या प्लान है, एंड देन हाउ टू वर्क टुवर्ड्स दैट। सो कम्युनिकेशन इज सुपर इंपॉर्टेंट। ना आजकल हम लोग देखते हैं कि खासकर स्टार्टअप कल्चर में हायर फास्ट एंड फायर फास्ट का कल्चर हो गया, तो हाउ डू यू सी दिस? If you haven't supported your employees in a down market, they are unlikely to support you when when the tide turns. We've seen that in the last 2 years. So in 2020, there was this great resignation where everybody is resigning. People lost jobs, and then the tide turned over, and then it became more of a recruiter's market. So these things keep happening. If you want to build a long-term organization, you have to build a strong core team, and the team has to stick together, and in our kind of business, which is more about persistence, which is more about consistency, your clients have to see the same people over and over again, right? So my oldest employee has been with me for like 5-6 years. They know her by name, they know her personally, so it's very important to have the team together through thick and thin. ना लेट्स से कि आपको अपनी कंपनी में से किसी को फायर करना है और आपको लग रहा है कि दिस पर्सन इज एसेट नहीं है हमारी कंपनी के लिए, तो आपको किसी को फायर करना है, तो कैसे आप कैसे बोलोगे उस एम्प्लॉय को? When you fire someone, it's not about the person who's being fired, it's more about the people who are staying back. What is the message that they are getting, and how the whole thing is handled is very critical. And it gives a message to the rest of the team as well. So very respectfully always. So that's the culture that we want to build. Whether somebody is with us, was with us, we're recruiting someone, deal with everybody with a lot of respect, respecting them for whatever they bring on the table. It's again about communication, right? I mean, आप कैसे उनको बता रहे हो कि क्यों ये वर्कआउट नहीं हो रहा है, एंड क्यों आप टीम में शायद कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट एज कम्पेयर टू shooting an overnight mail and blocking their login IDs the next day. That's not the way to communicate when you're firing people. What not to do when you are investing? Don't keep it very complex. हम्म। आपके पोर्टफोलियो में सब कुछ होना चाहिए जरूरी नहीं है। So हम्म। don't have this fear of missing out kind of a logic. हम्म। आज आपने एक नए चीज के बारे में सुना, लेट से क्रिप्टो, तो आपको वो भी आपके पोर्टफोलियो में रखना है। फिर आपने कल स्टार्टअप के बारे में सुना, वो भी आपको पोर्टफोलियो में रखना है। देन आपने कोई स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में सुना, वो भी रखना है। फिर किसी ने आपको बोला कि डायमंड अच्छा इन्वेस्टमेंट है, वो भी आपको रखना है।
So a big part of a bad portfolio creation is FOMO, fear of missing out. तो मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को देखा हुआ है कि उन्होंने ये क्यों खरीदा है, अगर मैं उनको पूछूंगा वो बोलेंगे वो ट्रेंड हो रहा था तो मुझे लगा वो नहीं रहेगा तो शायद प्रॉब्लम होगा. So complexity of the portfolio is the first mistake that they do. Second mistake is वो returns expectation जो रखते हैं portfolio से काफी absurd होता है. अगर मैं कोई भी एक यंग इन्वेस्टर को आज पूछूं कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स क्या है, उनका एक्सपेक्टेशन कैन बी वेरी वेरी अनरियलिस्टिक. मैंने नंबर्स सुने हैं विच इज एज हाई एज 25-30% पर annum मुझे चाहिए. Because again they are looking at some small incidents where किसी ने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया, वो 2 महीने में 40% दे दिया उसको. So they go into that trading mentality. They will be like, अच्छा every month अगर मैंने 5% भी कमा लिया तो साल का मुझे 60% मिलेगा. They don't realize that investing is not a 1 week or a 1 month kind of a game. ये आपको करना है 25-30-40 years के लिए, अगर आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल. सो इतने लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी में आपका रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन हैज टू बी रियलिस्टिक. एंड व्हाट आई टेल अ लॉट ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स इज you may be probably surprised कि next 25 साल में आपका portfolio returns is not even double digit. It could even be less than 10%. Be open to that idea because जब inflation कम होता है country में, automatically returns भी कम हो जाता है. So don't have unrealistic expectations when you're starting to create a portfolio, and don't create complexity कि आप बहुत सारे product में invest करते हो and net result is that the investment is not working for you. These are the two most important mistakes I've seen people do. What do you think? What's the right age for investment? As early as you can start saving. I know of people who do internships in college, for example, at the age of 17, 18, including myself when I started doing internship. Whatever you can save, as little as 500 rupees a month, should get invested. Because A, you get into that habit of investing early on, and B, any money saved is going to be helpful in the future. So the answer is for me as early as you can. Yeah. Yes, as early as you can, in the sense, even your pocket money. So my son gets a pocket money. He has a demat account with Grow. He makes his own investment. So he's 14 What's years old. Age क्या है? He's 14 and he's one of the not so active. All his friends are even better, all his classmates, they are talking when they come home, they're talking to me about what stock to buy, what what's the trend now, is the recession going to happen, right? So there's a lot of awareness amongst ninth graders for investing, right? So I mean, it's the benefit of so much influencers. They're following these people on Instagram, they're getting a lot of knowledge. It's working in some ways, in a good way, encouraging youngsters to think of it. When I And was started, मुझे ये सब पता ही नहीं था. But yeah, smart, and they have that orientation, so they are they're thinking of it. And schools also now, unlike how they were, they do have money education classes. They talk about it, so those are good trends. So the sooner the better. Warren Buffett apparently started when he was 11, and he claimed he was late. Oh my God. Okay. So दो aspect है. एक है this kind of people who are aware and they are doing a lot. Like Bhuvanaa said, the ninth graders are discussing investments and they have started as early as that, which is a wonderful thing. The only possible side effect of that is, again, they will go into this multi-security portfolio by the age of 20. They will have everything in their portfolio. They will have some cryptos and this and that, right? That itself is a problem, as I said earlier. But it's still a better thing to do because at least you are investing something. There is a second part of this entire market where probably, when you said, I have not even started. And when I speak to a lot of them who have not started, their issue is they don't know how to start. They are like, but karna kya hai? Matlab, I have money, but I am so unaware of what to do. And that is why one of my earlier responses was, pick an index fund, just keep investing in it. Nothing is going to happen bad to you. You will not regret that decision at all. Bhuvanaa, my question is to you. What's your money rule? My money rule? So I work on percentages. So if I get in 100 rupees, I say, okay, 7% goes to giving after you pay your taxes. So my first item is pay the tax. And then whatever you have to give, you give. Whatever you have to save, you save. And then you spend. So
that's my money mantra. So you put your priorities in order. Okay, what's your take, Harish, on this? I'm one of the more aggressive kinds. So once my expenses have been planned and the emergency fund has been put aside, which is for the next 12 months, whatever money I'm able to save, I will be investing in equity because that's the only asset class which I believe will beat inflation over a period of time. So in whatever forms, be it in stocks, be it in mutual funds, and I also personally invest in startups. I keep investing in businesses in one form or the other, and nothing else in my portfolio at this point. Okay, my question to you both, what's your startup mantra? Execution, execution, execution. Okay, cool. Bhuvna? Yeah, so I would say create a business that can create impact. The money will follow. So it's important that you're doing something that's impactful, that's making a difference in people's life. The money will follow. So yeah, move the needle. अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए आप लोगों के आगे के क्या प्लान्स हैं? Our plan is to grow organically, get to a level where we are financially sustainable, no matter whether we do anything after that or not. हम already उस level पे पहुंच चुके हैं. We are already making profits at the bottom line level. We have been very prudent in terms of कहाँ पे spend करना है to ensure that we are growing. So first step is that कि एक ऐसे level पे पहुंचो, इतने clients को लेके आओ जो हम individually service कर पाए. We don't want to go into that model of having relationship managers and then there's a lot of churn that happens and clients are not happy with the entire experience that they're going through. So we will reach a point where we will be able to handle all the clients that we can, and then focus on leveraging the technology that we have created. So we are creating the technology in-house, and we will leverage it and create a product which is more for everyone. So we will have our own high net worth individual clients that we will continue to service, but we will also then have a product which is more a fintech B2C product where whatever we have learned, whatever we have offered to a HNI client who is paying us fees, we want that to be offered to everybody, including someone who's beginning in their investment journey. तो वो जो journey है उसके लिए वो उस time पे we will probably raise funds जब वो moment आएगा. Okay, Bhuvna? Bhavna, just to add to that, this is very interesting because when we want to go the fintech way to scale our business, there are a lot of players who are already coming in. We may not be the first mover. We may not be the first, but we'd like to be one of the best. Because the differentiation will come in the focus on the advisory, on the personal side of things. Right now there is a lot of work happening on giving AI-based, quant-based investment ideas, giving tips, building portfolios, right? On execution, speed of execution. There'll always be somebody who can do it faster, who can do a more elaborate job, who can who can probably technically do better than you. But can there be somebody who cares more than you? Right. So that is where the focus is. Can we bring that element of while we are high tech, never lose the touch, right? So we would want to build something that's both high tech and high touch because personal finance is personal and then finance is first personal, then finance. So money decisions are not rationally made. Most of them are emotion-ridden decisions. So it's very important to take care of the person, their personal goals, their aspirations, their behaviors, their fears, and then an investment plan that is in support of their core value system. So can we do that? Is there some precedence to it? We don't know. We are on the lookout looking for somebody who's done an exceptionally good job on working the behavioral side in a more scaled up manner. But if we manage to crack it, I think we'll be one of the first, and we will be pioneers in this line of work. Yeah, okay. Thank you so much, guys. Thank you so much. बहुत ही interactive session था हमारा ये, बहुत informative था. It was very nice meeting both of you. Thank you. Pleasure.